Let me to introduce the resource person. Professor Muhammad Shamim is a professor in the Department of Commerce, Aligarh Muslim University, Aligarh. He has meritorious academics in finance and control and holds a doctorate from the Department of Commerce, Aligarh Muslim University, Aligarh. He has impressive teaching experience for more than 2 decades. His specialization is in the field includes the corporate finance, investment, research methodology, applied accounting, and statistics in business finance. Professor Shamim is also a visiting faculty at the Institute of Chartered Accountancy of India, Aligarh chapter. He has more than 40 publications published in top national and international journals, Scopus indexed, and have been authored a book on financial management. He has contributed too many chapters on the subject of management, accounting, portfolio management, business statistics, and security market for the Center of Distance Education, Aligarh Muslim University. Professor Shamim has served in many administrative positions at the university and has supervised more than 10 research scholars, over 50 master's dissertations. He has been acknowledged and earned several awards for his commendable work in his area of expertise. He has attended impressive number of conferences from around the nation. He has been actively involved in overseas assignments and work. Professor Shamim has imparted a multitude of the lectures at numerous prestigious institutions, and presently he is a member of the Curriculum Development Committee at the university level, and his remarkable scholarly and professional journey has proved to be extremely beneficial to the today's participant. And with these words, sir, we welcome you to this program of the 10 days research methodology program. Really, the Department of Social Work as well as the Department of Psychology is very much thankful to you for really sparing the valuable time to share your vast experiences with the participants. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request you, please. Assalamu alaikum and very good afternoon to all. And the session after having lunch is very difficult, but this is my, you can say, passion to interact with the student. Wherever I go, whether on personal trip or educational trip, I do visit educational institution to interact with the students. All over the, you can say, country I have visited academic institution, and my intention is to get interest of the student, because I don't believe like giving too much textual thing. I will let you know about the research with visual or pictures only. I will not speak too much. I will not like give so many conceptual things or technical things. The topic assigned to me is sampling and estimation of sampling size. All of you are research scholars, basically research scholars, PDF, you are engaged in research. And obviously, you might be knowing about sampling and all these things. But before coming to sampling, just for my satisfaction, I would like to cover the research process in very brief. I will complete right from beginning to end in very brief, and then I will come to sampling and sampling estimation, size of the sample. Now the first question is, what is research? Because all of you are research scholars. Even
Even I'm from Department of Commerce. Students completing commerce, and I ask what is commerce, they are not able to explain. Most of the students I'm telling. Even in selection committees, candidates appearing for commerce teacher, they are not able to explain what actually commerce is. Sometimes they are confused commerce with business, commerce with trade, commerce with management, and that's why, just for my satisfaction, I would like to discuss what actually research is. Research means to do something different, to do something new, to do something which has utility, to do something which is solving certain existing problems of the society. Upgradation, innovation, discovery, invention, all these things are the part of research. And I will give you some pictures in 5 to 10 minutes. These are simply stones. If you see the development of human civilization, these were the arms in the beginning of human civilization. Then slowly and gradually, with the passage of time, it has been upgraded to make it more sophisticated. You can see it was a development, it was the innovation. Then again, in ancient time, people used to hunt animals using stones, but it used to be very dangerous, and just to minimize the risk, it was planted in that way. Later on, these are upgradation. Then being in the war was very torturous. In ancient time, you have seen people have been engaged in the war for last so many months. Okay? Sunrise to sunset. And the war was continued for many months. And those who were engaged in the war, they found extremely difficult situation. And somebody got the idea to make the war simple, Mr. Cold. Okay? Mr. Cold got the idea. Ancient time, war used to be sunrise to sunset. Once I visited Udaipur, I saw the sword of Maharana Pratap. And entire for protection, 88 kg and 15 kg, then protector, sunrise to sunset without any break. Try to think how torturous war was. So it has been simplified by Mr. Colt. The first revolver was invented by Mr. Colt. Then again, its range was very, you can say it was not very far. So some innovation were done, upgradation was done. You can say the modern arms, you can see. But again, these became very costly and expensive. Necessity is the mother of all invention. If you want to secure at low price arms, these are also available in the market, but these are illegal. All of you know it very well. This is the first missile launched by Russia called Sputnik in 1957. Later on, some more missiles, sophistication, upgradation, improvement. This is the first aeroplane developed by Wright brothers. Aeroplane was not in the shape which today we are experiencing. It was the first aeroplane. You can see they are flying. Wright brothers, this was the first aeroplane. Okay? Its shape was like this. Later on, you can see upgradation, improvement, changes for betterment of the society. And you can see such kind of planes. Also, we have reason to create such kind of planes. This is the first car developed. This is the first car. The shape or picture you can see. Then it was upgraded. You can see, you have experience, you have seen. And this is the future. This is the first train in the world. It was upgraded, improved. And you can see the future for betterment of life. Okay? Interior of the train, you can see. This is the first bicycle invented by Macmillan. First bicycle. It was made of wood. Then some changes were done just to solve certain problems. Some improvements were done to feel better. You can see the shape. Then again, creativity was done. For small kids, always there's a risk, they may fall down. So obviously, supporting wheels are there.
And electric bicycle are also there. You can say some people are more creative. They want to produce something unique. Even in like snow, like you may use that bicycle. This is the first computer developed by Charles Babbage. He's called father of computer. Its shape was like this, like in one room size computer. Then it was improved, was given better shape. Then again it was improved. Then IBM developed for personal use. That computer, big computer, uh, was not meant for general public. So how a general public can use a computer? It was developed by IBM, Apple, and nowadays you can see the computer or laptop shape is something like this. First mobile, its weight was more than 4 kg. First mobile. You can see how it has improved, upgraded. And nowadays, you can twist. The first television, jailbird, invented. That time, it used to be like a prestige symbol. Even when first telephone came, Graham Bell developed first telephone, then entire song in India was Hamare Piya Ge Rangun, something like that. Entire song was, okay, pictured. You can see these televisions, then again improved, again improved. The first movie, it was black and white. You just see first picture. Even visuals are not very clear. But slowly and gradually people work to improve for betterment. You can say things were improved. First colored movie of the world. Picture was like this, first colored movie when it was developed. Then it was improved. You can say. Again improved. Again improved. Again improved. Nowadays. Right? So you see how much improvement is there? थोड़ी देर देख सकते हैं latest ही. Okay. Now, these are the pictures. I hope with these pictures it is clear what actually research is. Research means to do something different, to do something new for betterment of the society, to solve the existing problems. Okay? And now I will show some pictures. These pictures showing these people are engaged in research activity in different fields, in different segments, because most of you are from different segments, different fields. So all these pictures, people are doing some kind of research. Maybe social work people, sometimes do like this, when they go for survey. These people are doing research in different areas, different fields. All these pictures showing some kind of research. It means they are trying to find something new. Something is existing, but we do not know. Certain like phenomena, certain attributes of animals or stones or any particular area. So people are trying to find something new, something different, so that they could bring it to the knowledge of the general public. These pictures are showing some kind of, people are engaged in some kind of researches. Okay? Laboratory-based research, and that's why there's a classification, laboratory research, okay? Field research, something like that. I will come later on. Research means to identify the existing problems and to improve, to solve the existing problems. Now question is, why research is so important? Why ICSSR is funding funds so that people could come and attend and learn about the research? Research is something which will make everyone, every country on the pinnacle of success. Those countries spending huge money on research, they are on the top. We call R&D. Every big organization is having research and development section, like marketing department, finance department, production department, IT department. Apart from this, a department is having R&D department. Means a company organization is having R&D department. What is the purpose of R&D department? To bring improvement. Like mobile came S1, Samsung S1 for example. Then S2 was better, S3, S4, S5, S6, S7. Then it was too much about S. Then J1, J2, J3, J4, like that. Just for improvement, just to make things better. And obviously for organization, this research will bring profitability. This research will make them exist in the market because competition is too much. So for efficiency, betterment, utility, cost cutting, addition in knowledge. And addition in knowledge means
all of you, I think, already has been allotted topics. If you develop a model, theory, and law, definitely you will get Nobel Prize. Like law of demand, gravitational force of law of gravitational force of Earth. Okay, so many models are there. Sharpe's model, Markovit's model. So many models are there in different areas used. So if you develop these models, these are called pure research. Okay, primary research, pure research, fundamental research, development of model, theories, and laws. You can do something different, you can do something new, but question is to what extent you can do. It is up to your capacity. So many limitations are there. Limitations of fund, limitations of time. You have been given only 1 year is left to complete your PhD, so obviously you will be hurry up to complete your work. And for doing research, you need wisdom, brainstorming. What is wisdom? Wisdom is the highest thing. For example, I will just tell you the unit. You know data. Data is a plural. Singular of data is datum. One piece of information. Data means you collect the information. For example, I collect the information about the age of the participants. Age between 20 to 25, 25 to 26, 26 to 28. So I have got the data. I will come to know what about the age group of the student. Certain things I will know. So data is giving you information. If you see any kind of data, the data will give you information. The more information you search, more knowledgeable you will be. The more information you search, if you don't know something, you search Google, you search books, dictionary, okay, you become knowledgeable. The question is, after attaining knowledge, what's the benefit? Some people study too much, they always search, they have plenty of knowledge. Some people think, yeah, he is foolish, why to attain so much of knowledge? What's the benefit of attaining knowledge? And knowledge will let you give wisdom. Wisdom is the ability of a person to solve certain problems. So research scholars, researchers need to have wisdom, brainstorming. They must have creativity. Creativity means doing something different. Creativity is the opposite of routine. Creativity is the opposite of routine. Something you do in routine way will not be a creative thing. If you do something different, and that's why there's a proverb, intelligent people don't do different things. They do same thing differently, right? So creativity, and you must have motivation also. Adventurous is also time, cost, and effort, and you must be optimist. These are the qualities required. These are the countries, at certain point of time, I have recorded, I have taken. These countries spend how much amount they are spending on R&D. So if you say USA, China, Germany, these countries are on the top because they spend a lot on research and development. You can see India is also somewhere. Yes. You can see. As compared to China, you can see. As compared to USA, you can see. USA has 30 crore population. We have 150 crore population, 5 times more. But our spending on research and development is very low. This is just a starting. Once we will get the taste of development because of research, government will start funding more and more. Everywhere, like in developed countries, if you get published paper in Q1 journal, you will be funded. Even 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, doesn't matter. Your institution will give funding because ranking of the institution is based on what about the contribution of different scholars and faculty members in the field of research. This is also a lesson. Like nowadays we are talking about NAC accreditation, ranking of the universities, but internationally there must be international ranking. How many universities of India are internationally ranked? Because we are not trying. For example, AMU, we have applied in 2014 for the first time. We should be ranked, okay? But we haven't applied internationally. What about our ranking at international level? So we have to apply. So we need different kind of preparation. Different things will be checked. Different things will be evaluated. What about the contribution of research? Not like UGC careless, because this is the Indian context. Internationally, these are not accepted. Peer reviewed. Anyone can develop such kind of thing. Journal ISBN number. Even you go to ICSSR, within 1 hour you will get ICSSR number. I thought it's a very big thing. Once I went there, and within 1 hour we gave application. They said come afternoon and take the ICSSR number. So it's very easy. But for international ranking, these things are not very relevant. They want publication of the faculty members, research scholars in Q1 journal, Q2, Q3, Q4. These are categorized. Now we are talking about scopers. We are talking about scopers. Scopers paper होने चाहिए हमारे.
Now I'm coming to the research process. The question is, when you want to start research, when you have to collect samples. But for that, you need to know what is the first step. Research always starts with your curiosity. Research always focus on existing problems, challenges, issues. So in whatever field you are, in whatever area you are, in whatever area you have interest, try to think where are the problems. Problems are the main source of innovation. If you want to make something new, if you want to make something different, you have to touch upon the existing problems. And problems are everywhere. I am from commerce, so I have to look into the field of commerce. Within commerce, my area is finance, so I have to see what are the problems in the finance. What are the political problems? What are the economical problems, social problems? So you have to touch the existing problems. This is the first step in research. First step, to look into the existing problem. This is the first step. Now, after looking for the problem, if you want to do something new, maybe you have searched the problems, you have recorded the problems, but maybe a solution has already been given for those problems. And for that, review of literature you have to do. Who has done work on solving certain issues or solving the problems? And that's why review of literature is done. So review of literature, you have to go through different research work in the form of thesis or papers or articles, okay, or projects. So in order to know what methodology has been adopted, what method has been adopted, maybe same problem you are solving, but your methodology is different. Your technique is different. Your technique is better than existing. You have to prove. Then only you will be highlighted. So main objective of review of literature is to know what are the work which has been done in order to solve a particular problem. An objective of review of literature is to know the research gap, where you have to focus. When you select the topic, being a research scholar, you find like extremely difficult from where to start. You just go for review of literature. Keep on doing, as long as supervisor is not focusing on you, keep on doing review of literature. The more review of literature you will do, simpler work will be left for you. So leftover work, the objective of review of literature, whatever review, whatever things you quote, you have to give references. This is a different topic. I'm telling you how to give references for one author article, two author, three author, books, project, that you can learn differently. I'm just giving you an idea. Objective is to find the research gap where you have to focus. The gap, the same idea if you copy, it will not be a research. Somebody has handled the problem and you have also handled the same thing in same way, it will not be a research. And that's why how this problem has been solved, who has given solution, what will be your role, how you are going to solve. You are going to solve in different way or in the same way. If you are solving in different way, it will be a research. If you just copy one thesis published in Karnataka, the same thing you copy and certain changes you make in UP, it will not be a research. ऐसा हो भी रहा, it is happening, but it will not be a research. Research के बहुत सारे motive होते हैं, motives होते हैं. Why you are doing research? कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, नहीं यही तो मोटिव है. This is the objective. I will be eligible for assistant professor and for further promotion. PhD degree is required. This is the motive. Or for namesake, some people are not concerned with their academic. I just want there should be prefix doctor in my name. मैं जब डॉक्टर बनना चाहता तो वो तो नहीं बन पाया, लेकिन अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम डॉक्टर. कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं. मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी आप डॉक्टर बने, उस वक्त तो मैं पढ़ने वाला नहीं था. अब मैं रिसर्च स्कॉलर बन गया, एक मौका मिला अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना. डॉक्टर एक साहब मुझसे बोले कि अलीगढ़ से कोई डिग्री दिलवा दो. हमने कहा अलीगढ़ में रेगुलर कोर्सेज, तो क्या रेगुलर तो नहीं आ पाऊंगा. हमने जरूरत क्या, पॉलिटिक्स में थे और वेस्टर्न यूपी में थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए नाम में हाजी लगा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर भी लगा हुआ है, उसमें ब्रैकेट में लिख दो अलीग, तो बड़ा फायदा होगा. तो ये भी कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल भी देखते हैं, किसी के नाम में डॉक्टर लगा हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता. पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी पढ़े लिखे नहीं है, एक के नाम में डॉक्टर, इट गिव गुड इंप्रेशन. ये भी एक रीजन होता, ठीक है, ये भी एक मोटिव हो सकता. देयर आर डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स behind each and every one, and you know better what is your motive for doing research. Okay, but research doesn't mean you will be confined to educational institution. There are so many research scholars, they are working in top companies,
Suppose in a company there's a problem, product is not being sold. So in R&D department, research scholars are working. They know the entire methodology, how to go through. For example, a product is not being sold, it is not in demand. What's the reason? A good doctor is one who knows the root cause first, then giving solution. So our research scholars will always try to find the root cause of the problem and then will give solution. So problems are everywhere in the world. Even if you ask Bill Gates, owner of Microsoft, I think you don't have because you have such vast company. No, we have so much tension. Always Berkshire Hathaway is growing, Adani from India is growing, Reliance from India is growing. So many companies are there. We have tough competition. Our ranking is in danger. And nowadays it is not number one. So they are in trouble. They are in tension. For last so many years, we were number one, Microsoft number one. But now Apple, Amazon, many companies are emerging. So they have problem. So how to solve those problems? Their R&D department is working. We have to do something in different way. In the past, we were leader, but now we have second ranking, third ranking, fourth ranking, like that. So every organization, everywhere problems are there. तो कोई ये नहीं कह सकता कि problems are not solved. The problems are everywhere in every organization, in every company. So being researcher, your job is to solve the existing problems. So don't confine yourself to educational institutions only. Corporate trainers are there. Corporate trainers. Many NGOs are there, like social work people are working in their research team. They are making policies. How government is making policy? Based on research outputs. These workshops, seminars, conferences, worldwide going on. The output, the final outcomes, these are analyzed by different agencies to make the new policy. Politicians are not very educated. Basically, researchers. Why ICSSR is submitting or giving funds? So that some outputs will be there. You people will be developed. You will work on research. You will solve certain problems. Maybe few of you will solve. So it will be for betterment of the country. And that's why different funding agencies are there. So once you got the research gap, you have to mind the gap. You have to fill the gap. And based on the gap, you have to develop objectives. What are your objectives? Now it will be very clear. Your topic was something else, but on the basis of review of literature, you came to know what is the gap. So on the basis of gap, you will set certain objectives, maybe 4, 5, 6, depending upon your capacity. Okay? After setting the objectives, based on objectives, you have to develop hypothesis. Hypothesis is a testable statement, which can be testified based on data. Hypothesis is a statement which can be verified, which can be tested. Okay? Have you visited MU campus in the evening? Many of you from outside. If you visit in the evening from that road, Jamalpur to Shamshad Market, you will find many students are consuming tea. तो सारा अलीगढ़ वहाँ चाय पी रहा. आपने have you seen? तो एक बार क्यूरियोसिटी हुई कि क्या अलीगढ़ के स्टूडेंट सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? It may be a topic of research. एक क्यूरियोसिटी है. Let's check, just verify. I will make a study. You can select a topic. Tea drinking habit of students of universities of North India or UP. Okay? So in North India, so many universities are there. You will take sample of BHU, Allahabad, Lucknow, Gorakhpur, Aligarh, or in Delhi or in other states also. Your objective is to prove, to find tea drinking habit. क्या AMU के student ज़्यादा चाय पीते हैं? This is the question, research question. Objective is to know the tea drinking habit of the students of different universities of Northern India or South India, any part you may conduct the study. Okay? Then you will select what are the universities. Similar universities you will select a number of universities. Suppose 5 universities you have selected. Now in each university number of students are different. So according to the university you have to collect the samples. So for example in AMU 30,000 students are there. What should be the size of the sample? In DU maybe 48,000 students are there. What should be the size of the sample? Okay? In Agra University so many colleges, affiliated colleges are there. If you include affiliated colleges, you will find maybe 50,000 students. So what should be the size of the sample? So development of hypothesis. And based on hypothesis, you will come to know what kind of research you are doing. Now coming to types of research. It is a quantitative research or qualitative research. When your study is based on attributes, honesty, especially people from psychology,
They study about happiness, okay, tension, or satisfaction, okay. You study about the attributes. It is called qualitative research. But when you study about based on secondary data, data is available. You have tables, you have data, and based on that data you are making analysis. Numbers are already available from secondary sources. Your research will be quantitative research, okay? So quantitative and qualitative. Your research will be fundamental or basic or causal research, okay? Or diagnostic research or descriptive research, historical research, longitudinal research. So many types of researches are there. So you will decide, and accordingly you will make research design, how you have to conduct the research, from where you will collect the data, primary or secondary, questionnaire or email, like whatever you will discuss. These are different types of researches, okay? I think all of you are research scholars, already you have studied. Many of you have qualified NET and JRF. So already you have studied research methodology. Even in your educational institutions, you have attended RM classes, right? Research methodology classes. So all these things I'm not going to discuss. So different types of researches are there. Now coming to collection of data. Again, you have to decide this data will be available from primary source or secondary source. If I want to know, suppose Aligarh is there and there's Agra University. Job satisfaction of employees of AMU and Agra University. So this job satisfaction, this data is not available. You have to collect. So obviously you will follow primary. If I want to know the performance of Indian banks, profitability of Indian banks with comparison to foreign banks or private banks. So if you go to RBI website, data is available. What about the profit of SBI? What about the profit or any other information of ICSSR Bank or SDFC Bank, IDBI Bank? This data is easily available to their own website or RBI website. So you will collect the data through different channels and you will analyze according to your objective and hypothesis. So it will be, you have to use secondary data. Now coming to primary data, again based on observation, based on interview, questionnaire or database, data can be collected in these different ways. समझ में आ रहा? बोर तो नहीं हो रहे? It's okay, fine. And once you collect the data, depending upon hypothesis, you have to use some statistical tool. If you will not use the statistical tools, it will not be like, it will not be proved. Hypothesis will not be proved. अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, ऑब्जर्व किया, मैं जेएनयू भी गया, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी गया, मैं आगरा यूनिवर्सिटी भी गया, मुझे लगता है अलीगढ़ में ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, मैं मीडिया वाले अब थीसिस में लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आई कंक्लूड, ये अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी, ऑब्जर्वेशन किया. Statistically you have not tested. Is there significant difference with respect to tea drinking habit of students of different universities of northern India? So once you have to collect the data, after that, once you have proved, you have completed the thesis based on actual data. You went to different universities, you collected the data. Suppose in JNU, how many tea every day you consume? You ask the student, 3, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 12. AMU में कभी 28 भी हो जाती, कभी 30 भी हो जाती, कभी 10 भी हो जाती. तो एवरेज एमयू में निकल के आया 9.7, जेएनयू में निकल के आया 3.2, आगरा यूनिवर्सिटी में निकल के आया 2.1 और यूनिवर्सिटी में 3.2. अब वो थीसिस आ गई, स्टैटिस्टिक्स आपने यूज किया और उससे प्रूव हो गया, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट स्टूडेंट्स ऑफ एमयू कंज्यूम मोर टी एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज. अब वो जो थीसिस होगी इसको रख के ना बैठे, यू हैव टू इन्फॉर्म. पहले तो मीडिया वालों को बताइए. अब मीडिया में आ जाएंगे, बहुत आधे घंटे माहौल बनाएंगे, आज हम आपको बताएंगे किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चाय पीते हैं. आज हमको बताने जा रहे हैं, हमारा एक सर्वे में खुलासा हुआ है किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा चाय पीते हैं. अभी हम आपको बताएंगे, आधे घंटे तो ये बताएंगे नहीं, कौन नहीं बताएंगे. ब्रेक आ गया, उसके बाद देखते रहेंगे. हाँ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे और सब यूनिवर्सिटी में दिखाया जाएगा स्टूडेंट कितनी चाय पीते हैं और बहुत मुश्किल से बताएंगे जब सोने का टाइम हो जाएगा. जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा चाय पीते हैं, सबसे ज्यादा चाय पीते. अब ये इंफॉर्मेशन न्यूज में होगी, इससे क्या फायदा होगा? बहुत सारी चाय कंपनीज होंगी जो ऊटी में है, जो वहां पे है, आसाम में है. अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा शौकीन लोग हैं, हर तरह की चाय आ जाएगी, ईरानी चाय आ जाएगी, अफगानी चाय आ जाएगी, ठीक है, हैदराबादी चाय आ जाएगी, हर तरह की चाय आएंगी. आज कश्मीर की चाय, नमकीन चाय, निम चाय ना, कश्मीर से फ्रॉम कश्मीर, वहां की चाय, नमकीन चाय चलती वहां पे. तो हर तरह के यहाँ पे चाय के शौकीन बहुत है. हर
कंपनी को फायदा मिलेगा, अपनी मार्केटिंग करेंगे, आपने रिसर्च किया, इंटरव्यू आ गया, सुपरवाइजर का भी इंटरव्यू, हाँ मेरा सबका इंटरव्यू, वहां के एचओडी का इंटरव्यू होगा, स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, ऐसे 2-4 स्टूडेंट दिखाएंगे भाई कुछ पता नहीं, हम तो काउंट ही नहीं किया, एक बार एक हमारे दोस्त ने काउंट कर लिया 51 चाय हो गई थी तो ऐसे से चीजें दिखाई जाएंगी। तो रिसर्च से ये सब चीजें आएंगे, इससे फायदा होगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन से लोगों को पता, अलीगढ़ में लोग ज्यादा चाय पीते, कभी भी आपके गेस्ट आएंगे बाहर से आएंगे तो चाय लेके, कहा क्या लिया जाए, वहां बुलाया गेस्ट जा रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना बच्चों का, चाय लेके जाते हैं, वहां के लोग चाय के शौकीन। आसाम से कोई टेस्ट देने आ रहा है, यहाँ चाय लेके आए, कश्मीर से कोई आ रहा है नम चाय लेके आ गया, नमकीन चाय कोई बाहर से आ रहा, अलीगढ़ में आ रहा, ईरानी चाय, बहुत सारी चाय होती, अब अरबियन टी होती है, हर तरह की चाय होती है। Once you have collected the data, you have analyzed, you have to use a particular statistical tool. अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है रिसर्च टेस्ट को, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, यू हैव ऑलरेडी, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, क्योंकि जो भी पैरामेट्रिक है उसी के पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक भी टेस्ट। You need to understand what is parametric test, where you have to apply, and where you have to apply non-parametric test. If I collect the information from you, what is your age? What are your marks? I got the information. I can calculate mean, median, mode, standard deviation, right? So if parameter can be drawn from the collected data, you have to use parametric test. But if I say, have you voted? Your answer is yes or no. Your answer will be yes or no. I got the information yes or no. So I cannot draw any parameter. So I have to use non-parametric test. Simple. If you can calculate mean or standard deviation from the data you have collected, you have to use parametric test. If you cannot collect, your answer is in yes or no or something else which are not in numbers, you have to use non-parametric test. Okay? Very simple definition. It's a correlation. Your objective is to know the relationship. If it is parametric, you have to use Carl Pearson's coefficient of correlation. Rank correlation. 2 judges are sitting. Who will be Mr. Aligarh? 1, 2, 3, 4 is coming. They are just giving grade. Okay? I cannot say he is 5 smart, he is 10 smart. We cannot say like this. But certain grades are there. So you have to use Spearman rank correlation. That is non-parametric. Okay? Similarly, for knowing the difference, knowing the impact, we have parametric test as well as non-parametric test. Okay? Somebody else will discuss, but I'm just giving you an idea. And selection of statistical tools. Which test you have to apply depends upon the language of the hypothesis. There is no significant relationship, you have to use correlation. There is no significant association, you have to use chi-square. There is no significant difference, you have to use t-test or z-test. There is no significant among. बहुत सारे हैं, comparison करना, कई सारी cities, कई सारी universities में, you have to use ANOVA. So depends upon the nature of the or language of the hypothesis, you have to use the statistical tools. And there are many more tools, many more techniques. Econometric techniques are there, factor analysis is there, so many things are there. But briefly I'm just discussing. And now when you want to analyze the data, we have many, manually you can do, but we have many softwares. You can use SPSS. There is no hard and fast rule. You can use R software. How many of you know R? एक लोग जानते होंगे R software. R है ना, command based है. You can use Minitab. MATLAB you can, Stata you can use. S+. You can use Excel. Now Excel has also been upgraded. Excel की market कम हो रही थी in order to penetrate in the research area. Now all the tools are available in Excel. T-test, Z-test, F-test. Anything you want to do, you can use Excel. Upgraded, Excel has been upgraded. R&D department is working on Excel. How to improve Excel. How to bring a lot of users for Excel. Users ज़्यादा आएंगे, आप user friendly बनाएंगे. It will be sold, it will be used by different experts. You can use calculator. Book में आपने पढ़ा T-test, फार्मूला लगाया, calculator के बेस पे आपने यूज कर लिया. आपने मैनुअली भी कर लिया. पुराने जमाने में लोग मैनुअली करते थे, सारे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन सब मैनुअली लोग निकालते थे पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो लोग डेटाबेस पे रिसर्च करते थे. कैलकुलेट करने के बाद उसका रिजल्ट लिखते थे, फिर इंटरप्रिटेशन लिखते थे, कमेंट्री लिखते थे. अब तो चैट जीपीटी है, सब कुछ लिख के आ जाता है ना. फिर डाटा बेस्ड ऑन द
After statistical tools, you have to make data analysis and interpretation. Then summary and conclusion you have to write. You have to give references and bibliography. And then if you have questionnaire, you may make appendix. Any other important document you want to add, appendix 1, appendix 2, you have to add. And your thesis will be completed. And now coming to main topic. Formula based है. How to determine sample size. How to determine sample size. What should be the size of the sample? इसमें SPSS लोड है ना इस सिस्टम में? SPSS है. अच्छा मेरी क्यूरियोसिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्चुअल एसेस बता रहा हूँ. मेरी क्यूरियोसिटी है कि आप लोग के जो पीजी में मार्क्स हैं वो 71%. ठीक है, ये मेरी क्यूरियोसिटी है और मुझे ऐसा लगता है, स्ट्रांगली आई फील, तो 71 विल बी पैरामीटर. टारगेट पॉपुलेशन आप सभी लोग हैं, स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर तो बहुत वो यूनिवर्स हो गए. टारगेट पॉपुलेशन जिसकी मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ यू पीपल, ये टारगेट पॉपुलेशन होगी. ठीक है, मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ? मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्स बार और यू कैन से मीन पॉपुलेशन, मीन ऑफ द पॉपुलेशन. आपकी जो मार्क्स है पीजी के 71 और पैरामीटर वैल्यू 71, मुझे लगता है 71 है. इसको मैं कैसे प्रूव करूं? मुझे ऐसा लगता है लगने से कुछ नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगी. आई हैव टू कलेक्ट द डाटा. अब डाटा कैसे कलेक्ट करें? हाउ टू कलेक्ट द डाटा? डाटा कलेक्शन की दो टेक्निक होती है, सेंसस एंड सैंपल. सेंसस मींस ईच एंड एवरी वन विल बी आस्क्ड, जैसे पॉपुलेशन सेंसस हेल्ड आफ्टर एवरी 10 years. ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता रिसर्च में कि ईच एंड एवरी यूनिट टू स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट. इट विल नॉट बी पॉसिबल. इट विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर. वो गवर्नमेंट एजेंसीज कर सकती है, जैसे सेंसस होता है, where all the information is collected in census. But being the researchers तो स्कॉलरशिप के बाद भी गरीबी होते हैं. ठीक है, you have to use sample. देखिए इसका कोई फायदा भी नहीं है. When you are studying based on sample, it is good. Why? क्योंकि सेंसस का कोई फायदा भी नहीं. अगर मैं एक स्टडी से निकाल लूं कि एक्चुअल भी निकाल लूं तो आपकी 72 आ रही और सैंपल से 71 आ गई, तो क्या फायदा हुआ? सेंसस. Sample is better. The sample technique, once it is covered, it is covering entire population. Whatever information you seek from the population, you get based on sample. और वो population और sample में फर्क नहीं है. फर्क कितना ये भी डिसाइड करना, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इसीलिए आता. 1-2% का डिफरेंस नहीं माना जाएगा. सोशल साइंस रिसर्च में डिफरेंस ऑफ 5% इज नॉट कॉल्ड एनी डिफरेंस. अगर मैं ये कहूं कि 71 और आपके मैं एक्चुअली डाटा कलेक्ट करके यहां पे निकालूं और वो आ गया 69.2, so I am right or wrong? I am right. क्योंकि based on sample, I said your population or the mean marks of the population is 71, and based on sample it is 69.2. हमने सबको कवर भी नहीं किया. मेरे ख्याल से आसपास ही सही. I am right. ठीक है. अब इसमें आप देखिए SPSS ऑन कर दिया. SPSS आपने यूज किया होगा ज्यादा लोगों ने. कितने लोगों ने बिल्कुल अभी यूज नहीं किया SPSS? देखिए आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तब भी गुड. कुछ चीजें होती है रिसर्च में, हर चीज आप नहीं कर सकते. आपके सीनियर से उनसे आप आउटसोर्स कर लीजिए. अपने सारे डाटा कलेक्ट किया, हाइपोथेसिस से ऑब्जेक्टिव है, किसी से हेल्प ले लिया. पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, स्टेटा और SPSS और पढ़ने की जरूरत नहीं. A best manager is one who gets work done from others. A manager is one who does nothing. अगर मैनेजर सारे काम खुद करेगा तो वो मैनेजर नहीं हुआ. If you want to become manager, you must know the art of getting work done from others. Definition है, management is an art of getting work done from others. ये definition है management की. Something you know is good. If you don't know, you can get work done from others. हर चीज आपको आने की जरूरत नहीं. अब आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं and you have to use econometrics. Do you think you have to learn econometrics? अगर आपने सीख लिया अच्छी बात है, नहीं सीखा you need not to worry. आप किसी दोस्त से हेल्प ले लें, किसी टीचर से हेल्प ले लें जिसको इकोनोमेट्रिक्स आती है. थीसिस हो गई, कंप्लीट हो गया, उसको समझ लें. यू मस्ट नो वेयर यू हैव टू यूज इकोनोमेट्रिक्स. टी टेस्ट नहीं आता, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेयर टू यूज टी टेस्ट, वेयर टू यूज जेड टेस्ट, वेयर टू यूज काई स्क्वायर, वेयर टू यूज एनोवा, एफ टेस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डाटा. What is the appropriate method of selection of data based on sample?
population is not quite large, even I can use census method for this population. Lekin because topic is sample, so I will take sample. And in case of sampling, again, there are two different types of method: probability sampling and non-probability sampling. If I collect the data with chance of selection of everyone, I will ask how much, if you don't mind, आपके पीजी में मार्क्स कितने थे, मैं पूछूंगा, किसी से पूछ सकता हूँ, हर किसी से नहीं पूछूंगा, but I can ask to anyone. लेकिन आपको ऐसा लगेगा मैं किसी से पूछ सकता हूँ. Random sampling I will use, or I can develop a system. Every third will take. Biases बिल्कुल नहीं होगी. Every third student will be taken. ये lottery. Suppose size is 40, तो 10 और 12 का sample मैं ले लेता हूँ. एक तो lottery system use कर सकते हैं. At random किसी से मैं पूछ सकता हूँ, उसमें biases हो जाएगी. She's from Kashmir, तो हो सकता है मैं इनसे पूछूं. ठीक है? At random जो थोड़ा सा unique दिख रहा है मैं उनसे पूछ लूँगा, तो biasness हो जाएगी. तो best sampling is one which is biasless, or random sampling is called best. In case of random sampling, lottery-based sampling I can use, systematic sampling I can use, stratified sampling I can use because many of you are from different states. हो सकता है marking system JNK का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, उड़ीसा का अलग है, बंगाल का अलग है. तो स्ट्रेटा हम बना लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है स्ट्रेटा बनाने की. तो मैं चाहता हूँ कि every third item will be taken, every third one will be taken. इसमें वेरिएबल व्यू पहले हम लिखेंगे, इसमें स्टूडेंट्स. हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं और भी फर्दर स्टडी करने के लिए. 1 फॉर मेल एड, 2 फॉर female. Okay. Then marks. Now coming to data view. Excel से थोड़ा डिफरेंट है. स्टूडेंट हमने असाइन किया 1, यहां से आप देख सकते हैं 1 मेल. ओके, सो दिस इज 1. एवरी थर्ड वन, अगर आप माइंड ना करें, आपके मार्क्स पीजी में कितने थे? 70. 70. 1 किया मैंने. 1 2 3 आप बताएं. हाँ 1. मेरा परसेंटेज कितना हुआ जी? 82%. 82%. ओके. देन 3 आप बताएं. 1 74. 1 2 3 आप बताएं. 1 है 76. आप बताएं. 70. 1 70. आप बताएं. 72. 2 है 72. आप बताएं. मेरा रिजल्ट सही आने जा रहा है क्योंकि हायर साइड हो रहा था. 68. आप बताएं लास्ट. नहीं ये अरे बाप रे, परसेप्शन गलत कर देंगे. 85. एनी हाउ. इसके बाद आप बताएं जी. गुड. 69. आप बताएं. 73. 2. आप बताएं. गड़बड़ हो रहा मामला. आप बताएं. अरे बाप. आप बायसनेस आप बताएं. 79. आप बताएं. जी 63. देखिए इसको बोलते बायसनेस, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूँ वो लाना. यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर जो है बायसनेस करता है. मैं रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, अच्छी नहीं आया तो डाटा मैनिपुलेशन. अब मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया ना मुझे इन्हीं की, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ. आई विल सेलेक्ट थर्ड वन. कितना आपने? 79. 79. नो प्रॉब्लम. ये डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया बेस्ड ऑन सैंपल. अब इसमें देखिए कोई मैंने बायसनेस नहीं की. ऐसा नहीं कि मैं इंटेंशनली मैंने किसी से नहीं पूछा. हो सकता है 1-2 स्टूडेंट जिनको मैं जानता हूँ वो चले भी गए,
उनसे मैं पूछ सकता था, ठीक है, ठीक है, उनसे मैं पूछ सकता था इंटेंशनली. Selection of every unit should be the same. That is called best sampling. कोई भी सिस्टम आप अडॉप्ट करिए, चाहे वो लॉटरी बेस्ड हो, चाहे वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो, एट रैंडम भी हो. एट रैंडम मैंने आपसे पूछ लिया, अच्छा आप बताएं 15 लोगों से पूछ लिया. इंटेंशन मेरा नहीं था पहले से टू आस्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी स्टूडेंट. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास. Whenever you collect the data, the first thing, देखिए फॉरेन एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास आपके कंप्लीट रिसर्च नहीं होता. Whatever you mention in the thesis, based on that they analyze and they give report. Okay, but external examiner, those are researchers, they will know what kind of data you have collected. You have a 2000 questionnaire, but once you give descriptive statistics of data collected, they will come to know what kind of information you have collected. And that's why once you collect the data, the first thing you have to give descriptive statistics. Go to frequencies. What is variable? Study of what is the variable in this research? Marks. What is parameter? 71 is parameter. Benchmark, जो मैंने कहा. So marks of the students and benchmark, that is 71. Comparison will be made. Which test will be used? There is no significant difference between what I think and what marks population is having. कौन सा statistical tools use करेंगे? T-test. T-test में भी 3 तरह के हैं SPSS में. Independent sample T-test, one sample T-test, and paired sample T-test. So this is one sample T-test. Only marks. There is only one sample. Okay. So I have selected marks. Variable is marks. Selected. This is variable. So what kind of statistics I need to know? I want like mean, median, mode. देखिए, once you collect the data, you have to give descriptive. On the basis of description, it will be clear data is normal or not. The basic condition of normality test एक तो converge alpha होता ही है. उसके बाद भी mean, median, mode quite similar आते हैं. If quite similar, एक जैसे हैं, bell shaped. It means data is normal. ठीक है? तो हमने mean, median, mode सम भी ले लिया. परसेंटाइल को अगर आप मेंशन करना चाहें 20 परसेंटाइल, जरूरत नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वेरिएंस, वेरिएंस मींस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, स्टैंडर्ड ऑफ द मीन, इसका एक फार्मूला है. कंटिन्यू. ओके, we have got mean, standard error of the mean, mode, everything we got. Okay. Now we want to prove, statistically we want to prove that there is no significant difference between 71, what is my perception, and actual marks of the population. इसके लिए हम use करेंगे one sample t-test. One sample t-test. Go to analyze, compare mean, one sample t-test, variable, test variable is marks, test value, that is parameter value 71. Okay, okay. Am I right or wrong? Right. Because difference is not more than 5%. But इससे आपको एनालिसिस नहीं करनी. एक सिंपल ये है, आपको ये वैल्यू देखनी. दिस इज कॉल्ड पी वैल्यू. इफ पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, more than 0.05, manually is different thing. P value is this much, you have to go to manual table. If calculated value of P is less than table value, it means there is no significant difference. But SPSS will tell you with this, you have to give interpretation based on this only. If this value is less than 0.05, it means there is no significant difference. There is no significant difference. अगर मैं ये कहता है 65, आप देखिए, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.05 से ज्यादा हो जाएगी. ठीक है? अभी आप देखिए, मैं चेंज करके देखता हूं. Go to analyze, one sample t-test. मैंने इसको 65 दिया. अब 5% ज्यादा डिफरेंस आया ना?
अगर ये वैल्यू 0.05 से कम आती, इट मींस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और इससे पहले कितना आया था? 0.03 था, 0.05 से कम था, इट मींस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जो मैं सोच रहा था 71, आई एम रॉन्ग। ठीक है, मैं ये सोच रहा था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 71 एंड एक्चुअल मार्क्स ऑफ द पॉपुलेशन। आई एम रॉन्ग, सो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया ये। ठीक है, पिछले केस में भी अगर मैं एग्जैक्टली 73 करता हूं, देखिए तो वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, 0.05 से ऊपर होगी, इट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। गो टू एनालाइज, कंपेयर मीन, वन सैंपल 73, ओके 2.92, 0.05 से ज्यादा आई तो इट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से आप पूरी एनालिसिस करते हैं। कंप्लीट मैंने बता दिया। नाउ कमिंग टू पीपीटी, हाउ टू डिटरमाइन द सैंपल साइज। सैंपल साइज होना क्या चाहिए, ये तो हमने एक अंदाज से ले लिया, लेकिन इसका एक फार्मूला है, इसका एक टेक्निक है, और बेस्ड ऑन दैट फार्मूला, बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स, यू हैव टू, suppose there is a population size, you have to collect the information. If you study entire population completely, that is called census method. Okay, size of the sample in case of census method is 100%. But population is quite large, and you want to study based on sample. So you have to, what should be the size of the sample? Okay, you have to decide. इसके लिए बहुत सारे factors होते हैं, जैसे सैंपल आपके बारे में मालूम होना है, व्हाट इज सैंपल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल्स, हाउ टू कैलकुलेट ऑनलाइन सैंपलिंग, ऑल ऑफ यू नो, इट इज वन पोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन दैट इन्फ्रेंस और कंक्लूजन और एनीथिंग वी आर सेइंग अबाउट द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन. So population, and based on sample we are drawing some inference. And there are certain rules for sampling, because the sampling and determination of sample size. Now, what about the principles of sampling? Once you are collecting data based on sample, the first thing is size should be appropriate. Okay. Second thing, random selection. Selection of sample should be random based. अक्सर लोग convenience sampling use करते हैं, judgmental sampling use करते हैं, and that is not good for the research. Research के लिए random sampling or probability sampling is called best. If you have used random sampling or probability sampling, that is called best. And there are so many types of random sampling, so many forms of random sampling. Principles of persistence. All the features, all the attributes of the population should be covered in the sample you have collected. Okay? Once size of the sample is quite large, even if population is very heterogeneous, then size of the sample you have to increase. Otherwise, it will not be, reliability test will be different. It will not be suitable to apply the test. इसीलिए, once you collect the data and apply the tools, before applying the tools, you have to go for reliability test, consistency test. Okay? ये सारे test आपको करने पड़ेंगे. Whether you can apply the test will give you proper result or not. Then only you can apply. Then principles of optimization, cost and efficiency also you have to see. Then principles of validity. Valid reason, or you can say inference can be drawn based on that. Time saving, economical in research, and it is representative. जैसे अगर आप देखें stock market में, Nifty is showing performance of 50 top stocks, 50 companies of India, which are representing different sectors, different industries. And the way these 50 companies are performing, Sensex or Nifty is moving accordingly. And in the same way it is presumed, it is called, stock exchange is called barometer of an economy. Economy में तो millions of companies हैं, but based on 50 companies we draw an inference about the economy. Why? Because these 50 companies, their value of business is approximately 40 to 45%. अगर आप देखें business size of the business of 50 companies which are in the Nifty, National Stock Exchange. So it means sample size, it means whatever inference we are drawing based on 50 companies, it will be presumed that in the same manner Indian economy is performing.
So broadly, sampling has two different techniques. One is called probability or non-probability sampling. In case of probability sampling, where chance of selection of probability sampling is 1, where chance of selection of each and every item is same. दो तरह के हैं. Simple random sampling. Simple random means at random 10 or 15 students I can select. Okay? But selection of each and every one is same. Selection should be done in such a way that आप सबको लगे या मुझे भी लगे मैं किसी को भी select कर सकता हूं. So this is called simple random sampling. Systematic sampling. In order to, जैसे I develop a system every third, every fifth, every 10th. Okay? Whenever you are selecting sample, so every fifth, you may develop any kind of system, lottery system or any system you may develop. This is called systematic sampling. Stratified sampling. If population is quite large and it is heterogeneous, so on the basis of heterogeneity, you have to make strata. Okay? Stratified sampling. Different groups. Just a group of like from West Bengal, group of Bihar students, UP in that way. And then you have to select on random basis from each group. That is called stratified sampling. जो clear नहीं होगा पूछ लेंगे. Cluster sampling. Population is quite large. We have to make small clusters. This is group of 3, group of 3, group of 3, group of 3 from the population. And all 3 will be selected. This is called cluster sampling. We are not selecting one. We are selecting like these 3, these 3, these 3 and these 3 like that. This is called cluster sampling. Then we have convenience sampling. Convenience means उनको लगा इतनी तेज कौन बोले आप बता दें इन लोग बैठे हुए आप लोग मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ एनर्जी बचाना चाह रहा हूँ या मेरे जानने वाले 5 बैठे तुम बता दो उनके मार्क्स मुझे पता है ठीक है कन्वीनियंस अपनी कन्वीनियंस है दिल्ली कौन जाए बेस्ड ऑन स्टूडेंट की बात हो रही नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया में अलीगढ़ की स्टडी है अलीगढ़ कर लेंगे एक मंगलायतन है यहाँ पे एक अलबरकात है करीब में अब दिल्ली कौन जाए आगरा यूनिवर्सिटी कौन जाए या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गोरखपुर लखनऊ कौन जाए वहाँ पे अपनी कन्वीनियंस से आगरा में जा सकता हूँ क्योंकि मेरा ननियाल है वहाँ पे ऐसे कह सकते हैं एक मेरा दोस्त रहता है लखनऊ में तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जा अपनी कन्वीनियंस से दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग जजमेंट अंदाज हमने कोई सैंपल कलेक्ट नहीं किया जजमेंट ले लिया मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट सिंसियर हैं क्योंकि लंच के बाद पूरी क्लास भरी हुई मैंने अपना जजमेंट दे दिया इलेक्शन होता है रैली देख के बता दिया भाई इनकी हवा चल रही है आज की बहुत यही जीतेंगे उनकी में उनमें भीड़ बहुत कम थी वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी अपना जजमेंट दे दिया कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया एक जजमेंट दे दिया ठीक है जजमेंटल सैंपलिंग इनकी स्टडी कर ली इनके दोस्त ये भी ऐसे ही होंगे प्रिज्यूम कर लिया वो भी इनके दोस्त भी ऐसे ही होंगे ठीक है जजमेंट दे दिया लेकिन हो सकता है दोस्त डिफरेंट हो कोटा सैंपलिंग फिक्स कर दिया भाई जितने भाई वेस्ट बंगाल के होंगे या कश्मीर के होंगे वो उनको मैं उन्हीं से कलेक्ट करूंगा इन्फॉर्मेशन बाकी सबको इग्नोर करूंगा एक कोटा फिक्स कर दिया मेरे जहन में जो भी केरल से होगा जो भी कश्मीर से होगा मैं उन्हीं से डाटा कलेक्ट करूंगा एक कोटा फिक्स कर दिया ठीक है सो इट इज नॉट रैंडम स्नोबॉल सैंपलिंग इस तरह की सैंपलिंग बड़ी काम आती है अक्सर लोग करते हैं जैसे यू वांट टू स्टडी अबाउट द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ मैनेजर्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक आप सिर्फ एक ही मैनेजर को जानते हैं वो प्राइवेट में काम कर रहा है उसके बाद चले गए उससे कह दिया या कुछ और बता दो तो उसने अपने रेफरेंस से 2 और बता दिए और उनसे कहता है उनसे भी कह देना हेल्प कर देंगे उन्होंने उधर भेज दिया उन्होंने और 3 बता दिया उधर चले गए स्नोबॉल सैंपलिंग कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है बट जिसने जहां भेज दिया वहां चले गए such kind of sampling if you collect data based on this called snowball sampling now coming to actual calculation ठीक है when you want to decide what should be the size of the sample जैसे आपने क्वेश्चनर बनाया 200 होने चाहिए आपको लगा 100 काफी है ये काफी ऐसे नहीं होगा रिसर्च में whatever you are mentioning in your thesis there should be justification अगर आपके एग्जामिनर ने पूछ लिया why you have selected these 3 cities उसका लॉजिक होना चाहिए why you have selected sample of 200 तो बस मेरी मर्जी थी ये रीजन है नहीं I have applied a formula which is mentioned which is used by other researchers एक लॉजिक है if there is any question asked by any examiner there should be logic ये आपको ख्याल रखना आपने यहाँ टी टेस्ट यूज करना था आपने का स्क्वायर क्यों यूज कर दिया एग्जामिनर ने पूछ लिया उसको लगा कि बेस्ड ऑन द लैंग्वेज ऑफ हाइपोथेसिस
उसमें लिखा हुआ देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन और नॉन पैरामेट्रिक, आपने टीचर्स यूज कर दिया, अब वो वहां पकड़ लेगा, क्वेश्चन नोट कर लेगा, दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, अब वहां से आपसे पूछा जाएगा। आपने अक्सर जो हमें थीसिस आती तो मैं देखता हूँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कितने हैं, नंबर 1 2 3 काउंट करते चला जाता हूँ, और फिर उसमें देखता हूँ लास्ट में रिव्यू ऑफ लिटरेचर मान लिया 200 है और लास्ट में जो है रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी है 130, एक क्वेश्चन बन गया मेरे लिए। आपने उनको कोट किया लेकिन आपने साइट नहीं किया यहाँ पे रेफरेंस में, ठीक है। तो ये चीजें एग्जामिनर ये सारी चीजें देखता। देयर शुड बी प्रॉपर सिमेट्री। पहली चीज मैं देखता हूँ एज एन एग्जामिनर, व्हाट इज द टॉपिक, अकॉर्डिंगली यू हैव research gap, objective, hypothesis, and accordingly you have used tools, and accordingly you have given suggestion. Suggestion वो thesis नहीं, general suggestion हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी। Do you think these suggestions emerge from your research work? No. अच्छा मुझे लगा मैंने लिख दिया। Only those suggestions you have to mention which have emerged from your research work. तो पहली चीज जो एग्जामिनर देखता है सिमेट्री। टॉपिक आपका है impact of like job on the stress of the employees. तो इम्पैक्ट का मतलब आपको रिग्रेशन मॉडल यूज करना हो, कहीं थीसिस में रिग्रेशन मॉडल है ही नहीं। इम्पैक्ट मींस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, देयर मस्ट बी सम रिग्रेशन बेस्ड मॉडल। आपने कोरिलेशन रिलेशनशिप दिखा दी सिर्फ, या आपने इस पे एनोवा भी लगा दी। देख कंप्यूटर में डाटा फीड करेंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे, वो रिजल्ट दे देगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स ठीक है, और जीडीपी ऑफ अमेरिका, आपके जैसे मार्क्स जितने भी एग्जाम आपने दिए और अमेरिका की जीडीपी, there is high degree of positive correlation, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे से आपके मार्क्स आ रहे हैं जीडीपी भी उसी तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। तो अमेरिका वाले क्या करेंगे, आप हमारी जीडीपी आपके मार्क्स पे डिपेंड है, इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर आपको दे देगा रिजल्ट, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन कंप्यूटर इज नॉट एज स्मार्ट एज ह्यूमन बीइंग, ये आपको सेंस होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए, ये नहीं करना है, रिजल्ट आ जाएगा, कंप्यूटर बता देगा, आपने एंटर करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, और आप शो कर दें कि अमेरिका की जीडीपी आपके मार्क्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो अमेरिका वाले आपको ले जाएंगे, सारी फैसिलिटीज देंगे, पूरी कंडीशन देंगे, कैसे आपके मार्क्स, क्योंकि उन्हें मालूम है, ठीक है। तो लेवल ऑफ प्रिसीजन, कितने परसेंट एरर को आप एरर नहीं मानेंगे। इफ योर स्टडी इज बेस्ड ऑन सैंपल, तो नॉर्मली इन सोशल साइंस रिसर्चेस एरर ऑफ 5% इज नॉट कॉल्ड एन एरर, ठीक है, एरर को हम नहीं मानते। वो जो हमने 71 लिया था शायद बॉर्डर पे ही रहा हूंगा, अगर 72 कहता, मैं सोच रहा था 72 कह दूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम इतनी अच्छी क्लास है क्लास ज्यादा अच्छी निकली। वो 89 वाले सारे तो यहाँ भी फ्रंट में बैठे हो, हमेशा लाइफ टाइम भी फ्रंट में बैठे होंगे आप लोग, तभी 79 है। ये पीछे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ के आप रहने वाले? बंगाल, बहुत पढ़ने वाले होते हैं। आप कहाँ से? से। तो आप माइग्रेट करके आए, हिजरत करके आए, इसलिए आपने खूब पढ़ा, कुछ लॉजिक है, रीजन है। चलिए आप कहाँ से? जी बुलंदशहर। आगे लोग कम पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आपकी परसेंटेज देख के मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। चलिए, तो आपको डिसाइड करना, ये 3 फैक्टर्स आपको देखने हैं। मार्जिन ऑफ एरर, देखिए जो साइंस में रिसर्चेज होती हैं, जैसे मेडिसिन में होती हैं, वो 1% की एरर, कोई मेडिसिन अगर बना रहे हैं तो 5-10% की एरर को नहीं मानेंगे, एरर 1% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे 99% डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस। सोशल साइंस में एक परसेप्शन है कि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, एरर ऑफ 5% ऑफ एरर वी डोंट कॉल इट एरर, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है व्हाट इज, सपोज ये 95 का मतलब ये हो गया कि 2.5 अगर मैंने ये कहा था कि आपके जो मार्क्स हैं 71, तो 71 का मतलब कि 69 और 73 दोनों साइड, ठीक है, 2 टेल टेस्ट हो गया, ठीक है। तो यही चीज है, तो आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपने कोई चीज कहती 79 तो उसकी एक लिमिट बन जाएगी, 2 माइनस 2 प्लस, तो 77 to 81 ये रेंज मिल गई। तो आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट अबाउट द कॉन्फिडेंस लिमिट, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, और एरर 5% होगी तो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, एरर 10% होगी तो 90% कॉन्फिडेंस लिमिट, ये आपको डिसाइड करना है। तो सोशल साइंसेज में 5% के एरर को हम एरर नहीं मानते, नॉर्मली 5% को लेके चलते हैं, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसी हिसाब से जेड टेस्ट की एक वैल्यू, एक फार्मूला है, ये वैल्यू आपको लिखनी होगी। अगर आपकी स्टडी 95 हम इसको लेके चलते 1.96, जेड स्कोर 1.96 है आपके लिए सोशल साइंस रिसर्चेस में। इसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल,
वही 5% एरर हो गई और कॉन्फिडेंस लेवल 95%, कोई नई चीज़ नहीं। जेड स्कोर हो गया 90%, error of 5%, 95% error of 5%, 99% error of 1%. Accordingly, there is Z score. Why Z score? Because there is a formula where Z score value you have to write based on how much error you will ignore in your research. Degree of variability. What is variability? Variation or standard deviation. Variation की study जो होती है based on statistical tool called standard deviation. जैसे आप लोगों के मार्क्स में स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम आया, अगर आप देखें तो अगर ये रेंज होती पीजी में 55 टू 99, ऐसा नहीं था, बहुत वेरिएशन नहीं था, वेरिएशन कम ही था, 79 टू 68 था, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं था, तो डाटा को हम नॉर्मल मान सकते हैं। और वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा होता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसको भी हम देखते हैं। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी फार्मूले में है, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट मीन निकाला, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया, तो जेड स्कोर पता चल गया, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पता चल गई। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जैसे कि पास्ट स्टडीज हम देखते हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी अच्छी स्टडीज होती है रिसर्चर उसको बेंचमार्क हम बना लेते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए जॉब सेटिस्फैक्शन पे, तो जॉब सेटिस्फैक्शन पे जो अच्छी स्टडीज है उनको बेंचमार्क बना दिया गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हम बेंचमार्क के हिसाब से लेते हैं। पास्ट स्टडी क्या है, उसके क्या स्टैंडर्ड डिविएशन हम उसको स्टैंडर्ड मानेंगे, उसको लेते हैं। जैसे 90 सोशल साइंस में एरर ऑफ 5%, ये बेंचमार्क बन गया, इसको हम एरर नहीं मानेंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपकी सिमिलर स्टडीज हैं, जो स्टैंडर्ड स्टडीज हैं, व्हाट दे हैव टेकन यू विल कंसीडर एंड दैट स्टैंडर्ड डिविएशन यू विल पुट इन योर फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला है लार्ज पॉपुलेशन के लिए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द सैंपल, ठीक है। जेड स्कोर 90% कॉन्फिडेंस, 95% उसकी वैल्यू दी थी, तो 95% और 1.96 वैल्यू थी। P मींस प्रिसीजन, 5% की एरर को आप एरर नहीं मानेंगे, और Q मींस 1 माइनस एरर। तो इसको आप सारी चीजें मेंशन करेंगे, एक फार्मूला जैसे ये दिया हुआ है। Z स्कोर उसी फार्मूले को इस तरह से लिख दिया, Z स्कोर स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन जितना भी होगा 1 माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, और मार्जिन ऑफ एरर आप कितना लेके चलते हैं, 5% की एरर। एक एग्जांपल है, इसमें आपको साइज ऑफ द सैंपल डिसाइड करना है इस केस में, ठीक है। तो यूजिंग द फार्मूला यू गॉट द आंसर 384। अगर फ्रैक्शन में आ रहा तो उसको आप 85 कर सकते हैं, ठीक है। इट शुड बी द साइज ऑफ द सैंपल। ये आप यूट्यूब पे कहीं भी देख सकते हैं, किसी बुक में देख सकते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ साइज। दो चीजें आती है, एक तो होता है कि पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट और पॉपुलेशन इज फाइनाइट, ठीक है। तो ये इस तरह से निकालेंगे, जहां जहां पे लिमिटेड पॉपुलेशन होती है उसी में एडजस्टमेंट हम करते हैं। जैसे ये आपने ये चीज निकाल ली पहले, अब आपको ये पता चल गया कि टोटल वोटर्स यहाँ पे इस केस में, जैसे ये एग्जांपल है अगले पेज पे 168, एक फार्मूला और आपको ऐड करना पड़ेगा, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, जो आपका N106 निकल के आया था प्रीवियस स्लाइड में। असल में दो एग्जांपल हैं, सेम फार्मूला यू हैव यूज्ड, वी गॉट द साइज ऑफ द सैंपल 1068। लेकिन इसी को अगर हम एज्यूम कर लें कि पॉपुलेशन एक लिमिटेड है, सर्टेन नंबर्स आर देयर, सो इन दैट केस वी विल यूज, जैसे एज्यूम किया 4000, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। 1068 सेम है, सिर्फ 4000 यहाँ ऐड कर देंगे, तो इन दैट केस साइज ऑफ द सैंपल शुड बी 843, और इसे राउंडिंग फिगर 844 कर सकते हैं। इट शुड बी द साइज ऑफ द सैंपल। तो दो फार्मूले दिए हुए हैं, और इसको सीखने के लिए सबसे अच्छा आजकल स्कॉलर्स भी होता है, क्योंकि आपको ट्यूटर्स नहीं मिलेंगे। आज जहाँ मैं ट्यूटर ढूंढ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, पीडीएफ कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो आपको ट्यूटर मिलेंगे नहीं, तो सबसे अच्छा यूट्यूब। कोई भी चीज आपको सीखनी, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना, SPSS आप ओपन करें, ट्यूटोरियल 1 2 3, कोरिलेशन विद SPSS, कोरिलेशन विद एक्सेल, कोरिलेशन विद R, 5-5 मिनट, 4-4 मिनट, कभी कभी 2-2 मिनट की होती है। टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, सिंपली लिखिए वन सैंपल टी टेस्ट विद SPSS, देखा था विदिन 5 मिनट्स। और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, एक का नहीं समझ में आया, दूसरे का आप देखिए, तीसरे का देखिए, चौथे का देखिए, तो इस तरह से आप चीजें सीख सकते हैं। जैसे मैं तो टीचर हूँ, मुझे ट्यूटर तो मिलेगा नहीं, किसी से तक मुझे पढ़ा दो, तो इसलिए यूट्यूब से सीख लें।
knowledge is plenty. Once you decide, once you determine that I have to learn something, it's very easy to learn. But the only thing is you have to bring your wholehearted dedication, commitment, sincerity, punctuality, and hard work. Things will be yours. Anything you can learn how to. But it should be the part of your habit. You want to learn new and new things. If you are habitual hard worker, you will not face any problem. So this is size of the sample. Another example, like same thing, same formula you can use. You will get the result. This is all on my part. Thank you very much. If you have any queries, if you want to ask anything, most welcome. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो है उत्तर प्रदेश के जो लगभग 12 साल तक के बच्चे हैं वो मतलब जो स्कूल नहीं जाते हैं ठीक ठीक उनके बारे में हमें कुछ मतलब डाटा कलेक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल ठीक ठीक तो अब हमारा जो है हमारा यूपी जो है हमने जो है सेट किया हुआ है टारगेट पॉपुलेशन ठीक है ठीक। यूपी की जो टारगेट पॉपुलेशन हम जो है तो डाटा गवर्नमेंट से ने बता रखी हो। गवर्नमेंट ने बता रखी बिल्कुल है हाँ। पर उसके अंदर 12 साल तक के कितने बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं गए ये हमारा मेन टारगेट पॉपुलेशन है ठीक है ठीक। मेन टारगेट पॉपुलेशन ये है हमारा तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो कितने बच्चे हैं फिर उसमें से हम सैंपल कैसे मतलब इसीलिए रैंडम सैंपल हम कैसे इसीलिए दो मेथड है, एक तो है फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन, दो फॉर्मूले हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉपुलेशन है इनफाइनाइट पॉपुलेशन तो वो दैट फॉर्मूला यू हैव टू यूज। मतलब वो तो देखिए जो फॉर्मूले से निकल के आता साइज ऑफ द सैंपल वो तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर भी ले लेंगे बेटर इट इज। और जितनी पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस होगी द सॉल्यूशन इज यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल। कभी-कभी रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो आपका सुपरवाइजर आपको सजेशन देते हैं कि यू इंक्रीज योर साइज ऑफ द सैंपल। साइज ऑफ द सैंपल से योर प्रिसीजन विल बी करेक्ट। वही इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, नहीं मिलती देन यू हैव टू यूज ऑब्वियसली सिमिलर स्टडीज में लोगों ने क्या काम किया, किस कंट्री या इंडियन कंटेक्स्ट में किसी ने काम किया होगा, हाउ दे हैव यूज्ड। इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सर अगर फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट वाला फार्मूला यूज किया और हमारा जो है सैंपल वो साइज सही माना जाएगा 700 आ गया फॉर बिल्कुल एग्जांपल हाँ, 700 अब 700 जो है वो बच्चे उत्तर प्रदेश में हमें उनका डाटा लेना है बिल्कुल तो हाँ। हम वो रैंडम सैंपलिंग अब या जो भी हम सैंपलिंग कैसे यूज करें मतलब हम कैसे वो अब ये है कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आपको आइडेंटिफाई आपको सर्च करना है, जाहिर सी बात है यू हैव टू कंडक्ट द सर्वे। अब आपको सर्च करना है कौन कौन से बच्चे कहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट की यूपी में है डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि उन्हीं से पूछेंगे ना। जब आपको पता चलेगा कि ये कभी स्कूल नहीं गए देन ओनली यू विल कलेक्ट दैट, तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने एक डिस्ट्रिक्ट का मालूम कर लिया कि मतलब इस बार एक विलेज का मालूम कर लिया ठीक है इसके अंदर हमारे पास जो है लगभग 60 बच्चे हैं 60 बच्चे। अब इसके अंदर से हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से हम 4 लेंगे यहाँ से आप 4 गांव लेंगे के प्रधान के बाद इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे यहाँ के 4-5 बच्चे जो स्कूल ही नहीं आते हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है हमें मान लीजिए गांव में 60 बच्चे हैं उस तरह के और हमने डिसाइड किया था पूरे यूपी में से लेना है जैसे 700 ठीक है इस गांव में से हमें लेना होगा मतलब 8 लेना है ठीक है। तो हम 8 घर कैसे अप्रोच करें मतलब आर्ट कैसे अप्रोच पहले 8 कर लें कैसे इन यूपी you have to divide the UP is quite large, you have to divide the population of UP target population into strata so that entire population of UP is covered, north UP south UP हर तरह से you have to collect from every segment of UP। आपको ईस्टर्न यूपी जाना पड़ेगा, नॉर्थ में भी जाना पड़ेगा, झांसी साइड भी जाना पड़ेगा, एवरीवेयर you have to select। नहीं तो मतलब उस विलेज में हमने मतलब 8 पार्टिसिपेंट मतलब 8 सब्जेक्ट्स का हमें डाटा लेना है अब आप ये देखिए कि once you have decided size of the sample, suppose 800 or 900, so this 800 or 900 you have how much you have to cover from each and every village or district। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, अंदाजा से निकाल सकते हैं प्रोपोर्शनेट करके उस पॉपुलेशन से निकाल लें। सपोज बुलंदशहर से मान लिया 30 आएगा, अलीगढ़ से आ रहा 32 आएगा, इस तरह से प्रोपोर्शनेटली यू हैव टू कैलकुलेट। और प्रोपोर्शनेटली भी उस डिस्ट्रिक्ट में ट्राई टू कवर rest of the villages, not confined from one particular village or one side of the villages। तो वो जो लिस्ट जो आएगी वो पूरे बच्चों के नाम रहेंगे उसमें से हम थर्ड थर्ड करके वो इस लिस्ट तरह में से से निकालेंगे। You have to work। आपको जैसे उस बच्चे का नाम आएगा तो उसके हम एड्रेस निकाल के Basically you have to justify and you have to prove that you have covered entire UP। UP की बहुत बड़ी